तो निमोनिया के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो निमोनिया होता क्या है? तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे निमोनिया की, इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा दैट्स alveoli rather than the bronchi of infective origin. That means bronchi की inflammation नहीं होती है, it will be the inflammation of the alveoli. तो होता क्या है एक्चुअली इसमें? uh, the alveoli, you know, those alveoli are a bunch of grapes like structure. जैसे एक ग्रेप्स का गुच्छा होता है, वैसा ही आपका जो ये स्ट्रक्चर होता है alveoli का at at the end of your lungs. तो वहाँ पे क्या होता है? There will be lot of exudates present in those alveoli. Exudate क्या होता है? Exudate means there will be lots of secretions or lots of fluid present in those alveoli. और exudate में क्या क्या होता है? What would be the composition of the alveoli? Exudate उसमें आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे. You will have WBC, you will have other cells available in that. You will have lots of cytokines, lots of interleukins, बहुत सारी immunoglobulins will be present in that exudate. तो इस डिजीज़ में क्या होता है निमोनिया में? तो ये जो alveoli है, those will get filled with the fluid. और इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ब्लड की वो चली जाती है. विल टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है लेटर ऑन. तो जब वो alveoli fill when those alveoli will be filled with the exudates, so there will be a lot of fluid in the alveoli and there will be hindrance to the gas exchange, so you won't be able to exchange the gas properly. So in those patients the problem of hypoxia, that means they will have lesser concentration of oxygen in their blood. वो कैसे होगा? Because जो alveoli होंगे उनमें ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? जो alveoli है those will not function properly. तो उस exudate में क्या क्या होगा? फ्लूइड में क्या होगा? There will be a lot of WBCs, macrophages will be there. There will be lots of plasma proteins. तो उसकी वजह से ये जो alveoli है इनमें जो functional capacity है वो कम हो जाए. And how this disease mainly occurs? There are various agents जो जिसकी वजह से ये disease होती है, and the main causative agent is the बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज की वजह से ये जो डिजीज़ है निमोनिया होती है. ऑफ कोर्स वायरसेस आल्सो टेक पार्ट इन दैट. फंगस जो है उसकी वजह से भी जो निमोनिया होता है. तो बट द बैक्टीरिया इज़ द प्रोमिनेंट वन. बैक्टीरियाज की वजह से ज़्यादा, यानी द मोस्ट कॉमन काज इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. तो यू कैन द अदर थिंग इज इट्स द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन काज ऑफ डेथ. यानी अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स होती, जो अभी वेव चल रही है दैट लेटर ऑन आल्सो लीड्स निमोनिया. इट्स यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन इसी चीज़ को बोलते हैं. कंसोलिडेशन क्या होता है? जो ये alveoli है, those will be filled with the mixture of inflammatory exudates. You must have learned in your previous semesters about the inflammation. वहाँ पे क्या क्या process हो. So there will be a lot of interleukins, there will be a lot of uh, WBC, there will be a lot of course bacteria will be there, there will be a lot of plasma protein. तो उसकी वजह से जो ये alveoli है that will became less functional and say because of that fluid. तो उसी को हम उस चीज़ consolidation. So consolidation you can say is the defining feature of the pneumonia. ठीक है? Okay.
तो अगर आप देखोगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, तो इसमें क्या होता है कि जो लंग होता है, जो लास्ट में अल्वियोलाइज प्रेजेंट हो, इनमें बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाएगा, और उसकी वजह से एज यू नो those should not be filled with the fluid. If those will be filled with the fluid, you won't be able to exchange the oxygen and carbon dioxide, so there will be problems. तो there are इसमें क्या क्या problems होती है, like अगर हम देखेंगे, suppose this is the alveoli, this is the alveoli of the lung, में क्या होगा, तो सपोज दिस इज द alveoli ऑफ द लंग, तो मेनली जो रीजंस होते हैं, वन ऑफ द मेन रीजंस विल बी द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन कैसे होगी, ऑफ कोर्स दैट विल ऑकर बिकॉज व्हेन सम बैक्टीरियाज विल एंटर, व्हेन सम बैक्टीरियाज विल एंटर इन द बॉडी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो वजह से there will be a lot of fluid in the alveoli and it becomes less functional. And the another problem is usually that happens with everyone, that's called aspiration. Aspiration में क्या होता है, ये अगर हम देखेंगे, these will be the broader जो मेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से ये होता है। एस्पायरेशन क्या होता है, एस्पायरेशन ये हर किसी के साथ होता है, कभी हम कुछ खाना खाते हैं एंड दैट एक्सीडेंटली गोज इनटू आवर लंग्स या ईसोफेगस आ जाता है, यूजुअली कुछ लोगों को थोड़ा सा लंग्स में चला जाएगा, तो दैट फूड, उस फूड पे क्या होगा, द बैक्टीरियाज वुड बी प्रेजेंट ऑन दैट फूड, तो उसकी वजह से व्हेन द बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट ऑन दैट फूड, व्हाट विल हैपन, जब वो अल्वियोला में चला जाएगा या कहीं पे भी ब्रोंक्यूल्स पे रह गया, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी बिकॉज ऑफ दोज बैक्टीरियाज। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उससे ज़्यादा फिर फ्लूइड वहाँ पे जमा हो जाएगा, so that would be one of the causes. And what defense mechanism we have for this? The defense mechanism we have for this is the coughing. Usually जब कोई food particle हमारे lungs में चला जाता है या trachea में चला जाता है, we usually what we do, we cough a lot at that time. तो this will be the reflex action at that time. तो उस cough की वजह से वो बाहर आ सकता है and you will be prevented with that condition. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एस्पायरेशन। सो द अदर रिफ्लेक्सेस जो हमें मदद करते हैं इस चीज़ में, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट हेल्प अस कंडीशन, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम दैट डिजीज़, और जो हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं लंग में, वो कौन कौन सा होगा। पहला अगर आप देखोगे यहाँ अल्वियोलाइज में, वहाँ पे होता है प्रेजेंट special kind of cells will be present, those those will be called as pseudostratified ciliated columnar epithelium. Okay? Pseudostratified ciliated columnar epithelium cells present. So you can say those cells have the cilia present on them. So if by chance you will engulf that food particle, अगर आपने अंदर लिया उसको, then what will happen with the help of those cells, you will be able to get that out uh, from your lungs or from your bronchioles. So that's also called, इसको और एक term भी बताई जाती है, so it's called pseudo stratified ciliated columnar epithelium, वहाँ पे present वजह से, और उन पे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, एंड यू नो दैट सीलियाज विल हैव दैट मोशन, और उसकी वजह से जो भी म्यूकस होता है या उसमें बैक्टीरियाज अवेलेबल होंगे या कोई फूड पार्टिकल करोगे, तो वो बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर। इस चीज़ को ये नाम भी दिया गया है, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर। So the next thing which help us is the cuff reflex. If something goes inside
यानी जब भी कोई डिजीज़ होती है तो क्या होता है, लंग्स की डिजीज़ होती है तो वहाँ पे आप यू आर कफिंग अ लॉट, सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी हम इट्स नॉट, ये ऐसे ही नहीं है किसी कफिंग हो, what you are doing, you are expelling the mucus from your lungs, so that mucus will have lots of bacteria, and it will have the other things present in that mucus as well, तो उसकी वजह से वो आप बाहर निकाल. And the third mechanism will be we have IgA IgA antibodies जो होती हैं वो प्रेजेंट, और उसकी वजह से जो है that will uh, that will get attached with the bacteria, बैक्टीरिया को वो फिर engulf करेंगे. you know that वो आपने पढ़ा होगा opsonization, how does that happen, engulfment फिर हो जाती है, इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा आपने. तो जब IgA इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड होगा इसके साथ, तो आफ्टर देन इट विल बी द सेल विल बी एनगल्फ्ड या बैक्टीरिया विल बी एनगल्फ्ड. तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारे इसमें लंग्स में. So the other thing which will be available is you will have macrophages. Macrophages जो होंगी तो उनकी वजह से क्या होगा, macrophages as you know those are the phagocytic cells. तो वो क्या करेंगी, suppose you have the bacterial, this will be the bacterial cell available here. तो bacterial cell क्या करेगी, it will produce the endotoxins. जब endotoxins release होंगे, what will happen after that, endotoxins will lead to the secretion of the leukotrienes. Usually जो leukotrienes, वहाँ पे बहुत सारे leukotrienes निकलते हैं. One will be leukotriene B4, and those are the inflammatory mediators, as you must be knowing about them. And the other leukotrienes will be leukotriene 4, leukotriene 5 will be there. So various types of leukotrienes are uh, released at that time. तो इन ल्यूकोट्राइन्स की वजह से क्या होगा, दोज विल एक्ट ऑन द these blood vessels पे वो एक्ट करेंगे, तो इनको डायलेट करेंगे. they will dilate those capillaries. जब वो डायलेट हो जाएंगे, so lot of fluid will come from those capillaries to the alveoli. तो जब alveoli में चले जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा जब fluid accumulate होगा, तो उसकी वजह से फिर जो है ये there will be a lot of exudates coming out to the alveoli, और उसकी वजह से फिर वो जो ये alveoli है नॉन फंक्शनल हो जाएगा. अब जो मैक्रोफेज है ये हो गया बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जब अंदर चला गया, उसकी वजह से क्या होगा, दैट विल एंडोटॉक्सिन्स क्या करेंगे, वहाँ से बहुत सारे ल्यूकोट्राइन्स, फिर दैट विल लीड टू द एंडोटॉक्सिन्स विल लीड टू द टिश्यू डैमेज जब हो जाएगा, वहाँ पे देयर विल बी रिलीज ऑफ लॉट ऑफ ल्यूकोट्राइन्स, लाइक ल्यूकोट्राइन B4 इज़ द मेन, जो आप याद रखना है आपको. उसकी वजह से क्या होगा, एंड दैट ल्यूकोट्राइन B4 इज़ द कीमोटैक्टिक एजेंट. कीमोटैक्सिस, या आपने पढ़ा होगा कीमोटैक्सिस में क्या होता है, दैट इज़ द कीमो अट्रैक्टेंट. तो बाकी जो केमिकल्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ. तो सिंपली यू विल रिमेंबर दैट द बैक्टीरियाज विल रिलीज द endotoxins will lead to the destruction of the alveolar wall, and that will lead to the formation of leukotrienes, and leukotrienes are the chemotactic agents that will dilate the vessels around the alveoli. And after then what will happen, lot of fluid and other chemotactic agents attracted towards the alveoli, and that finally leads to the filling of that alveoli with the fluid, and that will reduce the gases exchange later on. So that will be one of the mechanism. And what is the other thing, now you have the macrophages क्या करते हैं, if you remember, macrophages से interleukins निकलेंगे, interleukin 1 and tumor necrosis factor alpha. Like it is very difficult to write with the mouse here.
I'm sorry for that. You have to remember it like this. तो यहाँ पे if you have pen and copy there, you can write it. तो macrophages से क्या होगा? It will release when more and more macrophages. These are इनको alveolar macrophages कहते हैं, because they are present in the alveoli. That's why they get. तो ये क्या करते हैं? They act as the defense mechanism for alveoli. If there will be bacteria, they will try to engulf it. So what other things, when they encounter any antigen or bacteria in the alveoli, they will release some interleukin, like interleukin 1 and tumor necrosis factor alpha. And you know, जब interleukin 1 concentration increase हो जाएगी, IL-1, all that as IL-1, तो IL-1 की concentration जब increase हो जाएगी, so what will happen? It will result in the pyrexia. Pyrexia is the fever, Pyrexia. तो pyrexia हो जाएगा और उसकी वजह से हमें fever हो जाएगा. And it will other factors as well, like tumor necrosis factor. तो उसकी वजह से जो ये न्यूमोनिया पेशेंट्स होते हैं, क्या होता है? फीवर भी होता है. तो गर्ज कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड यू हैव अदर काइंड ऑफ सेल्स, लाइक यू हैव मास सेल्स. तो मास सेल्स के बारे में प्रोड्यूस द हिस्टामिन. मास सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस हिस्टामिन. Histamine also leads to the vasodilation, and that will result in the more जो exudate है बाहर निकले. And one more thing which you have to remember, these bacteria also treat other things, like one of the thing is informal, and that also results in the dilation of those blood vessels. तो उस वजह से भी जो है बाकी जो चीज़ें हैं, the other like plasma protein, they will come to the alveoli. So if we will sum it up, तो आप क्या याद रखोगे? The जो मेजर पैथोलॉजी जो यहाँ पे होती है न्यूमोनिया में, you will encounter the pathogen. It could be bacteria, or it could be the virus, or it could be the fungi. So then they release some chemicals like leukotrienes, endotoxins will be released, and mast cells will release histamine. तो उसकी वजह से क्या होगा? तो बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स, they will come to the alveoli, और वहाँ पे एक कैस्केड चलेगा, इन्फ्लेमेशन कैस्केड. एंड उसकी वजह से क्या होगा? जो ये लंग्स है या alveoli है, इनमें ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा. दैट condition is called as consolidation, as I said last time. So that is the defining feature of the pneumonia. Pneumonia में यही चीज़ है. तो जब ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा, तो that will to the less function of the lungs. Now if you will see here in this diagram, you can see this is the normal lung. जो यहाँ पे ये lung है, this is the normal one, and this is the inflammation alveolar wall. So you can see here in the lungs you have a lot of fluid present in the lungs, in the alveoli, and that will result in the obstruction of the airflow, and उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम यहाँ पे होती है pneumonia में. Okay,